Hello my dear students, welcome to English literature class. Students, today we are going to start the chapter number 14, An Uncomfortable Bed of class 6 on page number 108. This is the story written by the French author Guy de Maupassant. So reading from the first line, one autumn I went to stay for the hunting season with some friends in a chateau in Picardy. My friends were fond of practical jokes, as all my friends are. I do not care to know any other sort of people. Students, when the story opens in a chateau in Picardy, France. What is the meaning of chateau? Chateau is a large house. Picardy means Picardy is the name of city. It's a North France city. Fine. So we are introduced to a group of friends who have got together for hunting season. The narrator provides us with one critical detail about these friends, as the friends of narrator were jokesters who liked to play practical jokes on each other and everyone else. So this is a fact that the narrator didn't object to, because he told us my friends were fond of practical joking, as all my friends were. He did not care to know any other sort of people. When I arrived, they gave me a princely reception, which at once aroused distrust in my breast. They embraced me, they cajoled me as if they expected to have great fun at my expense. I said to myself, "Look out, old ferret, they have something in preparation for you." During the dinner, the mirth was excessive, far too great, in fact. So students, when the narrator arrived at the chateau, his friends greet him enthusiastically, are laughing too much at dinner. Then he observed that his friends were planning to make fun of him, noting that his friends were fond of practical joking. So I said to myself, look out old ferret. तो उसने खुद से कहा, मतलब उसने ये चीज़ सोची कि मतलब उसे अवेयर रहना चाहिए, because they were planning to make fun of him. They have something in preparation for you, for narrator. Fine. Moving on the next page. On page number 109, I thought, here are people who take a double share of amusement, and apparently without reason. They must be looking out in their own minds for some good bit of fun. Assuredly, I am to be the victim of the joke. Attention. So students, he thought that his friends were laughing without any reason. He was absolutely convinced that he will be the target of a prank. During the entire evening, everyone laughed in an exaggerated fashion. I smelled a practical joke in the air, as a dog smells game. But what was it? I was watchful, restless. I did not let a word or a meaning or a gesture escape me. So students, during the entire evening, narrator's friends were laughing continuously, where narrator could smell a practical joke in the air as a dog smells game. While he remained convinced that his friends had something humiliating in mind for him, but he could not figure out what it was. Everyone seemed to me an object of suspicion, and I even looked distrustfully at the faces of the servants. The hour rang for going to bed, and the whole household came to escort me to my room. Why? They called to me, "Good night." I entered the apartment, shut the door, and remained standing without moving a single step, holding the wax candle in my hand. See students, अब तक जो नरेटर है उसको बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर डाउट था कि वो एक प्रैंक का टारगेट बनने वाला है, क्योंकि उसके फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया, जोकस्टर्स थे, प्रैंकस्टर्स थे. ठीक है. तो अब जब वो एक छाटों में वो मिलते हैं, इकट्ठा होते हैं, ठीक है, हंटिंग सीज़न के लिए,
तो उसको अपने फ्रेंड्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डाउट था, उसको हर एक चीज़ पे डाउट हो रहा था। ही सस्पेक्टेड ईच एंड एवरी वन ऑफ हिज फ्रेंड। ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू बी द विक्टिम ऑफ अ प्रैंक। फाइन, द आवर रैंक फॉर गोइंग टू बेड। अब रात का टाइम था, ठीक है, सोने का टाइम हो गया था। एंड द होल हाउस होल्ड केम टू एस्कॉर्ट मी टू माई रूम। तो सारे उसके फ्रेंड्स हैं, जो उसको लग रहा था कि सारी चीज़ें मुझे गुड नाइट कहने आई है। क्यों? क्योंकि वो तो ऑलरेडी डरा हुआ था। आई एंटर्ड द अपार्टमेंट, शट द डोर एंड रिमेन्ड स्टैंडिंग। वो डर के मारे वहीं पे खड़ा रहा कि शायद अंदर कुछ ऐसा होगा कि वो मतलब एक प्रैंक का टारगेट बनने वाला है, उसके साथ एक मजाक होने वाला है। विदाउट मूविंग अ सिंगल स्टेप, होल्डिंग द वैक्स कैंडल इन माई हैंड। तो वो एक वैक्स कैंडल को हाथ में लेके खड़ा रहा, एज यू कैन सी इन द picture. Fine. I heard laughter and whispering in the corridor. Without doubt, they were spying on me. I cast a glance around the walls, the furniture, the ceiling, the hangings, the floor. I saw nothing to justify suspicion. I heard persons moving about outside my door. I had no doubt they were looking through the keyhole. So students, now the narrator heard the laughter and whispering of his friends from the corridor. Without doubt they were spying on him. Fine, that means वो उसकी जासूसी कर रहे थे उसके फ्रेंड्स। तो cast a glance means give a look. He gave a look around the walls, furniture, ceiling, hangings, floors. उसने सारी चीज़ को देखा। I saw nothing to justify suspicion. पर मुझे कोई क्लू ही नहीं मिल रहा था। I heard persons, मुझे persons की आवाज़ें सुनाई दे रही थी जो मेरे रूम के इधर उधर मतलब बाहर जा रहे थे, ठीक है। I had no doubt they were looking through the keyhole. He said that he was sure that his friends would be peeping inside the room through the keyhole. An idea came into my head. My candle may suddenly go out and leave me in darkness. तो वो सोचता है कि मेरे दिमाग में अभी कोई आइडिया आया था इस चीज़ को लेकर कि शायद मेरी कैंडल्स बुझ सकती हैं और यहाँ पे मैं अंधेरे में रह सकता हूँ। मुझे ऐसा लगा कि मेरी कैंडल्स ना बुझ जाए, ठीक है, यहाँ पे मैं अंधेरे में अकेला ना रह जाऊँ। देन आई वेंट अक्रॉस द मेंटल पीस and lighted all the wax candles that were on it. After that I cast another glance around me without discovering anything. I advanced with short steps, carefully examining the apartment. Okay students, what is mental peace? Mental peace क्या होता है? Mental peace is like a slab to keep something for decoration that is fixed on walls. जैसे walls के ऊपर slabs सी नहीं बनी होती, ठीक है, जिसके ऊपर डेकोरेटिव मटेरियल रखा जाता है। किचन में भी जैसे स्लैब्स बनाई जाती है, दैट इज़ कॉल्ड मेंटल पीस। तो उसने बोला कि मैं मेंटल पीस की तरफ गया और वहाँ से जो वैक्स कैंडल्स पड़ी थी उनको मतलब जलाया। फाइन, आफ्टर दैट आई कास्ट अनदर ग्लांस। उसने फिर से देखा पर उसको कुछ भी नहीं मिला। उसने छोटे छोटे स्टेप से वो आगे बढ़ा और अपार्टमेंट को एग्जामिन करता रहा। नथिंग, आई इंस्पेक्टेड एवरी आर्टिकल ऑन वन आफ्टर द अदर, स्टिल नथिंग। वो सारे आर्टिकल्स को, सारे ऑब्जेक्ट्स को बड़े ध्यान से देख रहा था पर उसको कुछ भी नहीं मिला। आई वेंट ओवर टू द विंडो, द शटर्स, द लार्ज वुडन शटर्स वर ओपन। तो मैं विंडो के पास गया और मैंने देखा कि वो जो शटर्स थे, यू कैन सी द विंडोज़, वो ओपन थे। आई शट दैम विद अ ग्रेट केयर। तो नरेटर ने शटर्स को बंद कर दिया एंड देन ड्रू द कर्टन्स। और क्या किया, जो विंडोज़ थी वो कर्टन से कवर कर दी, कवर द विंडोज़ विद कर्टन्स। फाइन, एंड देन ड्रू द कर्टन्स, एनॉर्मस वेलवेट कर्टन्स, एंड आई प्लेस्ड अ चेयर इन फ्रंट ऑफ दैम। तो वो काफ़ी हैवी वेलवेट के कर्टन्स थे, उनको मतलब बंद कर दिया गया, विंडो मतलब कवर कर दी गई और जो नरेटर है उनके सामने चेयर पे बैठ गया एज टू हैव नथिंग टू फियर। अब उसको लग रहा था कि यहाँ पे डरने वाली कोई बात नहीं है। फाइन स्टूडेंट्स, द रेस्ट ऑफ द पार्ट वी विल रीड इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे।